You can start. Correct. My sincere namaste to everyone. Good evening to all who belong to India. Good morning to people across various other countries as well. And good evening to people who are sitting ahead of India as well. So I'm Kapil Bhargava. I'm a founder of the brand ClickVeda. I'm a resident of Gurgaon, and I'm here to discuss a very important topic, and the subject is digital marketing. So before we begin the agenda, first I would like to thank IIU, the platform, Mr. Piyush, and the entire team to invite me as a keynote speaker on this platform. Thank you for this honor. And secondly, I would like to thank you people who are sitting at various platforms like Facebook, YouTube, and different other places as well, because the audience is the super most important. The third thing I would like to thank my Almighty, the God, who has given me enough knowledge and the confidence to speak among you. तो ऐसी बात नहीं है, अंग्रेजी is not the only language. सिंसियर नमस्ते। जो भी हमारे इन भारतीय यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आप समय बताएंगे, जो भी आप सुनेंगे मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक बहुत ही एक नॉलेजेबल कंटेंट में आपको बताऊं। और जो विषय है वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस आज करूंगा। अगर आप मेरे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, तो इन दैट केस आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आप कमेंट कर सकते हैं। एंड वाइल कमेंटिंग, इफ यू थिंक दैट यू हैव सम क्वेश्चंस, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। So I'll share the slide with you so that we can start off with the agenda, and we shall discuss each and everything in detail as well. So I'm going to share the screen. Language will both be Hindi and English. That's not a matter at all, because you people are very important, vital for me. और आपका satisfaction ही मेरे लिए matter करता है. So, from the initial stage I am discussing with you, please give me a quick minute so that I can set that accordingly. Yes, please. So, as I said, that ClickVeda brand belongs to me. I am an engineer by degree and a marketer by passion. तो इंजीनियरिंग करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी मैंने किया है, and we are able to cater to diverse clients from various other verticals and industries as well. So सबसे बड़ी चीज ये है कि जब मैं पढ़ाई मैंने करी, तो थोड़ा सा मैंने गहन अध्ययन किया, केवल पास होने के लिए नहीं, बल्कि उस विषय की जानकारी मैंने अच्छी तरह ली है ताकि मैं उसको अपने जीवन में उतार सकूं। एंड दैट इज व्हाई आई हैव चोजन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला फील्ड ऐसा है विच इज ऑलवेज एवरग्रीन, एंड सबसे अच्छी बात ये है चैलेंजिंग है। तो हमारा चैलेंज ये रहता है कि हमारे क्लाइंट्स को हम एक सुपर क्लास सर्विस दें, एंड आफ्टर द सर्विस इज ओके इन द पैनल ऑन बोर्डिंग, तो हमारी कोशिश है कि उनको हम परफॉर्मेंस अच्छा दें। सो ROI ड्रिवन एंड ROAS वी टॉक अबाउट, वो सारा काम हमारा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वी आर ऑल्सो अ ट्रेनिंग अकेडमी. I organize trainings on the topic of digital marketing, entrepreneurship, leadership, generative AI, and chat GPT, and every other subject which is of the era. और हम कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से हम काम करते हैं वैसे हम सिखाएं सभी को। So I organize workshops at colleges, workshops, top-notch companies as well. और हमारा FDP भी होता है, that is Faculty Development Program. और वो चीज़ हम सिखाते हैं ताकि वो वाइड स्प्रेड
एक अच्छे दूर दराज तक चीजें पहुंचे। तो आप पहले तो ये बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। एक बहुत छोटा सा एक विषय है जिसको अगर आप टेम कर सकते हैं तो स्ट्रैटेजिकली आप अपने को एलिवेट कर सकते हैं। सो आई थिंक इफ आई हैव डन माई सेल्फ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। इसीलिए वो चीज मैं यहाँ पे हूँ और कोशिश करूंगा इन फ्यूचर अगर मैं आपके साथ जुड़ूं किसी भी माध्यम से, तो मैं आपको एनलाइटन कर पाऊं नॉलेज के साथ। सो इन द सेकंड वी हैव द एजेंडा फॉर द टुडेज सेशन। सबसे पहले क्लिकवेदा नाए ब्रांड इंट्रोडक्शन। सेकंड, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, प्रोसेस क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, और डिजिटल मार्केटिंग हम करते कैसे हैं, और उससे हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। नॉट ओनली पैसा इज इम्पोर्टेंट, बल्कि अगर हम उसमें रेपुटेशन भी एनहांस कर पाए, या हम एलिवेशन कर पाए, एक डायस्पोरा इंक्रीज कर पाए, सोशल स्टेटस गेन कर पाए, वो सारे हमारे मार्केटिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एंड सर्टनली वी कैन एनरिच द आइडियाज एक्सपोनेंशियली। तो मैं इन सब पॉइंटर्स पे थोड़ा प्रकाश डालूंगा। और आपसे भी गुजारिश है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट है या कंसर्न है, तो डू नॉट हेजिटेट टू राइट टू मी। आई विल बी एबल टू सी ऑल द थिंग्स दैट यू राइट, एंड फील फ्री टू आस्क। सो वी हैव द ब्रांड। गुड़गांव में हम लोगों ने स्टार्ट किया। उससे पहले आई हैव बीन थ्रू वेरियस स्टेप्स एंड द लैडर्स, स्पेशली। तो एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनने का सफर कैसे तय किया जाता है, वो चीज मैंने एब्सोल्युटली किया है। हम स्टूडेंट, कॉर्पोरेट सेगमेंट, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स, और इन सभी वर्ग के अलावा जितने भी रिटायर्ड पीपल भी हैं जो कि गवर्नेंस में हैं, उन्होंने काफी ऑपरेशंस अच्छे किए हैं, बट टेक्नोलॉजिकली वो ज्यादा साउंड नहीं है, हम उनको भी डील करते हैं। So we have two verticals. One is the digital transformation agency, where work is to, where our work is to promote the businesses that other people have. And second is that we have the classroom teaching, whether it is online or offline, where we train people and mentor them so that they become successful marketers of the country. And not only for the country, but the globe as well, the world. Then we call ourselves the India's first multi-dimensional digital transformation agency, क्योंकि मुझे लगता है कि ये curation या digital transformation is actually the age where we deal with a lot of businesses, और वो चीज को हम एक traction दे पाते हैं। Now we talk about what is marketing. तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि डिजिटल मार्केटिंग जानने से पहले वी नीड टू नो कि मार्केटिंग क्या होता है। तो इफ वी हैव पीपल सिचुएटेड ओवर हियर, दे मे आस्क, otherwise I'm going to tell you what is that. So for example, let us forget about what we have read in the books, because everybody they read the books, and only a few are the people who implement what is written in the books. तो वो चीज अगर आप मार्केटिंग उस एंगल से देखें, उस पिन पॉइंट से देखें, तो आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगी। तो मार्केटिंग को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं कि कोई भी चीज का हम प्रचार करते हैं। प्रचार इज अवेयरनेस। अगर हम कोई भी चीज को हम नीड को केटर करते हैं, और अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विस को उस नीड, जो भी नीड है, उस नीड को ऑप्टिमाइजेशन के साथ हम उसको केटर करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, दिस प्रोसेस इज मार्केटिंग। ठीक है। अब नीड को हमने सेटिस्फाई कर दिया, बट नीड को सेटिस्फैक्शन करना मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है। एक्चुअल मार्केटिंग और एक्चुअल चैलेंज इज व्हेन वी जनरेट द लीड, व्हेन वी जनरेट द नीड ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी हैव। So whatever product that we have, of course, that product is a golden sugar for us.
But certainly, if we are going a step ahead, actually, we have to implement marketing. We have to generate the need of our product. And whenever we generate the lead, that is the actual challenge. So, need generation to the awareness, to the reach, and to the conversion, that every sequence step is a part of marketing. And that ends with the next process, which is called retention. So, from the need generation to the retention is a vicious cycle, which is under the umbrella of marketing. So, this is the definition of marketing. आई होप आप सभी को समझ आई होगी। इस डेफिनेशन को आप गहन थोड़ा सा गहराई में सोचिएगा, तो यू विल गेट लॉट मेनी थिंग्स रिलेटेड टू योर ओन सब्जेक्ट। ओके, एंड सेकंड वी टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो अगर हम मार्केटिंग को देखें तो मार्केटिंग एक प्रक्रिया है, क्रिया है, या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। बट इफ वी टॉक अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग, digital marketing is something which I call it a combination of art and science. So science is the background where I come from. The art is something which I have fostered within myself. So if you combine both these projections together, both these subjects or both these diaspora together, that's frame digital marketing. So whenever we have a commodity or any subject or service that we are promoting, what we do is we try to market, we try to identify the target audience, and then we are targeting or positioning of the brand is super important. तो टारगेट को हमने आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उसकी नीड को समझा, फिर हमने क्या किया, एक छोटा सा कंटेंट हमने क्यूरेट किया, और वो कंटेंट में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें डिवाइस करना। तो वो चीज को हम जब लोगों को बताते हैं डिजिटल के माध्यम से, उस पूरी साइंस को हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। एंड आर्ट इज वेयर इज कम फ्रॉम। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ कंटेंट राइटर एज वेल, आई एम अ ऑथर, आई एम अ राइटर, और वो सारी चीजें मुझे हेल्प करती हैं समझने में, आइडेंटिफाई करने में कि टारगेट हमारा क्या है, वो क्या समझ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, इसका लाइव एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, I have mixed audience in front of me. Those people who can understand English as well, and you can understand Hindi as well. तो मैं दोनों ही भाषा में इंटरेक्ट कर रहा हूं, ताकि जितने भी लोग हैं वो मेरी बात को समझ पाए, कॉम्प्रिहेंड कर पाए। नाउ दिस इज द आर्ट बेसिकली, and I want each and every one of you who will listen to me, who is listening to me, to foster within yourself for the success and for the trail of success stories. Next, we talk about digital marketing in a simple definition. When you perform marketing activities online using internet as a service and digital devices like computer, tablets, and mobile phones. This is called digital marketing. So finding your right target market, reaching them, proposing value by communicating and generating business on the internet. ये सारी कॉम्बिनेशन का जो पैकेज है उसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ऑल्सो एक चीज और है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, कि आपको उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है डिजिटल मार्केटिंग में जिनको आप नहीं जानते। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सामने जो भी पर्सन है, मैं उसके बारे में कैसे पता लगा सकता हूँ कि उसकी क्या एजुकेशन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, डेमोग्राफी क्या है। सो ऑल दीज पॉइंटर्स मुझे खुद पता लगाना होगा। फेसबुक, YouTube, or the Google, or any other platform, may it be TikTok, may it be Snapchat, that will not help at all to identify the audience. You yourself have to identify, and that is called an art. अब मेरे सामने आप लोग हैं, मुझे नहीं पता आपके बारे में कि what are you people thinking. You might have a vague idea that who is Kapil, what he will do on this platform. But if I'm able to deliver in the right appropriate manner,
as per your expectations, certainly I will uh, think about that I have given a value to you, and that is what you are here for. So if you are investing your time to listening to me, to meeting me, it is my responsibility and onus that I come up to your expectations. And that is what the solution providing is. So I believe that it was super clear to you and crystal clear as well. Now I proceed further to understand why this field is super important. So next we talk about why it is important. So let us talk about that. We have the India's total population, and not only if, since we are sitting in India, that is why we are talking about, but if we talk about the world as well, so entire population can be segregated into various segments as well, age groups. So what we see is 75% people, they are under the age of 30. They are in the age of 30, or we call it the youth people. So why I have segmented this? इसका एक आइडिया ये है कि डिजिटल मार्केटिंग से या कोई भी प्लेटफॉर्म पे हम मार्केटिंग करेंगे, हमारा सिंपल उद्देश्य है कि उन लोगों को टारगेट करना जो डिसीजन ले सकते हैं। वेरी सिंपल, आई बिलीव हमें उनको टारगेट करना है, फैमिलीज को या डिसीजन मेकर्स को जो अपने परिवार के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसीजन मेकर्स तो बहुत ही कम होंगे। तो अगर हमें मार्केटिंग करनी है तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा मुनाफा। करेक्ट? हर बिजनेस का यही उसूल है। एवरी बिजनेस हैज गॉट द ethics that in the minimum investment we want maximum efficiency and maximum output. So for that we need to invest our resource in a most beautiful manner, judiciously, in an optimized manner, so that we get the maximum ROI. May it be any business. So that is why we will pinpoint that audience and we will target them in a different segments and different platforms. Now we talk about heads-on comparison between the traditional marketing and digital marketing. सबसे बड़ी चीज ये है यहाँ पे कि बैनर्स और फ्लायर्स का जमाना चला गया, या न्यूज़पेपर, flyers, circulation. So that has been a slow down process. That has been an old school process. Why? Because there is a circulation of newspaper which has been reducing day by day and month by month. So month on month, the circulation is reduced. Certainly the readers are minimized and they have diverted themselves on the digital platform. और हमारा एक बिजनेस का एथिक्स और है कि हम वहां पे मार्केट करेंगे जहां पे हमारी ऑडियंस हो. So we will market our product only on that places where our audience is. I believe that audience is super important. And फिर हम कुछ एक चीजें हैं जो कि हम डिजिटल मार्केटिंग में मेजर कर सकते हैं. These are beautifully concepted so that हम उसका बेहतरीन रूप से फायदा उठा सकें. So the first is wide reach, no geographical boundaries. If I'm sitting in Gurgaon and we have clients from abroad as well, we have doctors, we have real estate players, we have luxury cars and various other things. तो यहाँ पे हम बैठे हुए वहां पे हम इंटरेक्ट करते हैं उनके क्लाइंट्स के साथ. दैट इज पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ओनली. आपको कहीं भी शॉप पे क्या वहां पे कस्टमर से इंटरेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है. आप घर बैठे ही वर्क फ्रॉम होम और फ्रॉम योर ओन ऑफिस वहां से आप ऑपरेट कर सकते हैं. बस आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक लैपटॉप या कंप्यूटर, दूसरा इंटरनेट चाहिए, फोन चाहिए, और दो और चीजें चाहिए. वो है आईक्यू और कॉमन सेंस, है ना. और एक और चीज जो आपको चाहिए वो है अबाउट द स्किल.
and the subject skill. So, for example, when I deal with the doctors who may be the plastic surgeon, who may be gynecologist, yeah, so I'm half a doctor because they give me the knowledge and I understand that because that is prerequisite to uh, promote any of the service that they have. So इसी तरीके से आप नॉलेज सीख करके यहाँ बैठे बैठे ही इंसाइट्स निकाल सकते हैं और इसको प्रमोट कर सकते हैं. Now, second, we have the increased brand awareness. So, brand awareness, if we talk about, is something कि हम कोई भी चीज प्रमोट कर रहे हैं, हमें ब्रांड की आइडेंटिटी बतानी है, हमें ब्रांड को बताना है कि ब्रांड सोचता कैसे है, उसका कल्चर कैसे है. अगर मान लीजिए एक ह्यूमन रिसोर्स कंपनी है, if the human resource company they have to hire people, they have to present themselves in front of the public as well, so that the public can trust them, and so is true for every other business. So we have the increased brand awareness. Why? Because we can measure every action that we do it. So today we have a lot many participants right now as well who are joined with us via various platforms. Why I'm able to see that? Because हम लोग ही अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं. पहले इस इवेंट के बारे में आईआईटी द्वारा बताया गया, फिर हमने ऑर्गेनाइज किया और अभी आप सब जो सुन रहे होंगे दे विल बी वेरी मच एबल टू अंडरस्टैंड कि वो अवेयरनेस हम कैसे कर पा रहे. दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव. सर्टनली अगर हम मेजर कर सकते हैं, इफ एवरी एक्शन दैट वी डू इज मेजरेबल, स्केलेबल, इट इज हाईली कॉस्ट इफेक्टिव. तो इससे हमने क्या किया? इससे हमने मुनाफा भी कमाया, इससे हमने ब्रांड को अवेयर भी किया, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने ब्रांड की पोजीशनिंग बनाई. ब्रांड कैसे काम करता है? सो आई हैज टेकन दिस इनिशिएटिव टू कोलैबोरेट विद मी, कपिल, हैविंग द ब्रांड ClickVeda, ताकि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी प्लेटफॉर्म पे हैं वो सब इससे लाभान्वित हो सके. हमारी ये ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम नॉलेज दे पाते हैं, इम्पार्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट वेरी नोबल कॉज दैट वी कैन डू इट ऑल टुगेदर. और ये चीज हमने कॉस्ट इफेक्टिव मेथड में ही करी है. करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है. रीचिंग आउट टू यू, reaching out via Facebook, reaching out via YouTube, I think that all the processes are done organically. And organically is something where we are not investing any monetary amount, any denomination that is not involved at all. So वो चीज हम cost effective देख सकते हैं. Then we have niche targeting. Niche targeting is something where we can specify the audience. So for example, digital marketing, अगर हम cater करते हैं, हमारा जो target audience है, that is 18 to the age of 65 plus. Why? Because जो भी एक teenager है, वो इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होना चाहता है, जॉब रेडी होना चाहता है. और जब वो जॉब रेडी होना चाहता है तो इंटरव्यू क्रैक करने से लेकर प्रमोशन लेने तक उसको मार्केट ही करना है. तो पहले से ही वो क्यों नहीं सीख लें? सो दैट इज व्हाई 65 प्लस वो वाला सेगमेंट क्यों? व्हाई? बिकॉज पीपल हु आर रिटायर्ड फेलोज, दे आर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, बट टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है. तो हम उनको सशक्त भी कर रहे हैं और साइबर की नॉलेज दे रहे हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, उसको इलेबोरेट करके अपने को ट्रैक्शन गेन कर सकें. सो ऑल दिस इज ऑल अबाउट. और दूसरा, हमारा टारगेट ऑडियंस नीश टारगेटिंग वो है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं. यस. सो अगर मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट टू द लार्जर स्पेस, so people can elaborate and spread more awareness and they can become successful. That is what is niche targeting. So we have two major objectives. जो भी ये करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं. The first is to make them the expert. Second is to make money. So everyone loves money, I guess.
Is there anyone who does not love money at all? I think very few people, not even the 1%. Because having the expert ideas is super important. आप भी चाहेंगे कि आपके जो भी एक्सपर्टीज हो या आपके डिस्टेंस को लोग नवाजें, आपको क्रेडिट दें. सो दैट इज व्हाट एवरीबॉडी दे वांटेड. सेकंड इज, आज अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं या इफ यू आर एम्प्लॉयड बाय एनी अदर कंपनी, you should have the multiple sources of income as well, because you are skilled people, and skilled people should not be retained by a single brand. So that is why we have got a team as well, and every team member is highly versatile and they are all rounders. तो आप ऑलराउंडर बन सकते हैं अगर आप स्किल गेन करें जो कि रिक्वायरमेंट है. तो फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग इस शताब्दी इससे तो कहीं जाने वाला है नहीं. Right? So that means I have chosen my career very wisely, because I go to places, I travel a lot, and we discuss that subject only because I think that if you have love for the thing that you do, that becomes a passion. और इसीलिए अगर मैं अपनी बात करूं तो हूं मैं इंजीनियर, लेकिन फिर मैंने मैनेजमेंट डिग्री वगैरह करी, सर्टिफिकेशन करे, और टुडे when I have to work, I really love my work. And today, on in a sequence, this is the third webinar in the morning. So for me, every day is a very lovable day. I enjoy my work, and that's how obviously the money will chase me. And that is why अपनी स्किल्स को मैं यूज कर रहा हूँ. हिंदी भाषी, मैं हिंदी में लेखक भी हूँ, अंग्रेजी में भी लिखता हूँ. तो आई थिंक आई कैन क्यूरेट द कंटेंट एंड द क्रिएटिव आइडियाज, which is more important. Let us talk about some customer journey as well. We have the old as well as the new. तो ये जो फनल सिस्टम है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि लाभकारी सभी बिजनेसेस को लेकर है. चाहे आप एक ट्यूशन एकेडमी रन करें, चाहे ऑर्गेनाइजेशन रन करें, if you are a edtech brand as well, if you are into pharmacy, if you are having a company of academicians, yeah, and various other things, maybe real estate, maybe politics, maybe sociology, maybe psychology. तो हर एक को ये एक कस्टमर फनल की जरूरत है. So on the top we have the awareness. The second stage, that is the interest. I'm sorry, desire. We have vision, and finally we have got the retention. So ये जो 5 step हैं, these are the part of not only the business but the life as well. तो अवेयरनेस, जब हम बात करते हैं, अवेयरनेस का मतलब है लोगों को जागरूक करना. तो आज मैं अपना ही लाइव एग्जांपल लेता हूं कि मैं आपके साथ जो भी लोग यहाँ पे बने हुए हैं, आपके साथ पहली दफा इंटरेक्ट कर रहा हूं, और आई एम एबल टू डिस्कस द सब्जेक्ट in a more appropriate manner, and I'm able to engage my people as well. So this is the one-side communication right now, but I can feel that people are happy, they are enjoying the topic. Why? Because I think that I'm talking my heart out, I'm talking my words out so that they are very suitable and comfortable for you. And this is what is aware. तो अगर मैं आपको अवेयर बेहतर करता हूं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा. यू विल बी मोर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मी द सेकेंड टाइम, द थर्ड टाइम, एंड दैट इज व्हाट इज इंटरेस्ट. डेफिनेशन, इंटरेस्ट, क्रिएशन, एंगेजमेंट. जो तीसरा स्टेप है, दैट इज कॉल्ड द डिजायर. मान लीजिए आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द इंटरेस्ट, you have some desires to ask a few questions related to your business. Certainly, you will reach out to me, reach out to us, and various other team of IIU as well if you have a desire to know something. That is the third step. The fourth step is decision making. अब मान लीजिए आपके ही बिजनेस में अगर आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, if you are interacting with the customer,
and you are trying to convert that customer for a certain product. और ये तीन stages complete हो चुकी हैं. The awareness, interest and the desire. The fourth is the decision making. जब वो आपके प्रोडक्ट के अनुसार या आपके प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए एक डिसीजन बनाते हैं कन्वर्ट होने का. अब चाहे वो माइक्रो कन्वर्जन हो, इट मे बी अ मैक्रो कन्वर्जन एज वेल, but they have decided in your favor. And then at the final step, we have the retention phase, whereby your customer becomes an advocate and they try to spread the word of mouth, the publicity and various other things. तो ये जो चीज मैंने आपको बताई है कस्टमर जर्नी, वो एक ओल्ड कस्टमर का है. अब हम न्यू की अगर बात करें तो नया कस्टमर क्या होगा. नया कस्टमर एक जब भी इंटरेक्ट करता है, सबसे biggest factor is the trust factor. So the consumer may discover the product at any stage, then they can skip the different stages. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही सर्विस प्रोवाइडर हो जो एक ही प्रोडक्ट को बेच रहा है. उस सिस्टम को बोलते हैं मोनोपोली. अब ऐसा मोनोपोली वाला सिस्टम नहीं है. तो इन दैट केस हमको क्या करना होगा, हमको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर देंगे. We need to find out the opportunity where we have to knock at the right place. और वो हम कैसे पता लगाएं. सबसे बड़ी चीज कि वो हम पता कैसे लगा सकते हैं. हम पता ऐसे लगाएंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट का स्वॉट एनालिसिस पहले हम करेंगे. स्वॉट एनालिसिस आई डिफाइन एज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. हमको आइडेंटिफाई करना है कि चैलेंज कहाँ पे आता है कस्टमर को. Whenever we have the customer or the prospect buyer, he or she is interested in our product, we need to find out where that product is a mismatch for that audience. And if we are able to do that, certainly we are at the top, whereby the new customer will also be our the new customer and the retention customer as well. So वो चीज को हमने देखना है. Next we move on to the next, which is the evolution of the customer or the consumer digital journey. So the consumer journey is more complicated than ever and keeps evolving. इसका कारण क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के से समझाता हूं. फेसबुक का एल्गोरिथम या गूगल का एल्गोरिथम एक लीनियर रिग्रेशन नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है. और लीनियर का मतलब ये हुआ कि वो एक के बाद एक सीक्वेंस होती है. करेक्ट. एक के बाद अगर एक सीक्वेंस होती है तो वो चीज आइडेंटिफाई भी जल्दी से हो सकते हैं. लेकिन वी नेवर नो व्हाट पर्टिकुलर पोस्ट इज मोस्ट लाइक बाय फेसबुक और द यूट्यूब और एनी अदर प्रोडक्ट ऑफ द गूगल. एंड दैट इज व्हाट द कॉम्प्लेक्सिटी अराइव्स. आज हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से. तो हमारे पास ऐसा भी एप्लीकेशंस है बहुत सारी, जैसे उबर है एंड वेरियस अदर. वी ट्राई टू बुक अ टैक्सी, बट क्या हमें एल्गोरिथम पता है उसका कि कौन सी टैक्सी को एकदम से टारगेट होगा, कैसे वो आएगा, कितने देर में आएगा. वी डू नॉट हैव द एंटायर थिंग, एंड दैट इज व्हाट द कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम. और जितने भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स की हम बात करते हैं, वो सारे कोई ना कोई एक कोडिंग लैंग्वेज में लिखे गए हैं. और वो सारी कोडिंग लैंग्वेज हमें उनसे अभी मतलब नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू नो अबाउट द एल्गोरिथम्स एज वेल. सो तीन चीजें का हमेशा हम ध्यान रखेंगे. सबसे पहले हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है. दूसरा, अगर हम अपने मार्केट का सर्वे कर लें, कंपटीशन एनालिसिस कर लें, तो वो दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तीसरा, अगर हम एल्गोरिथम को समझ गए कि हमने कोई भी पोस्ट करा इंस्टाग्राम पे एंड द फेसबुक और एनी अदर, फर्स्ट द कंटेंट इज देन पब्लिश्ड एंड आफ्टर दैट द कंटेंट इज सर्कुलेटेड. तो वो दोनों एल्गोरिथम हमें अंडरस्टैंड करने होंगे फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रांड प्रमोशन. So that is what the entire thing, the person action, shop on the site, search,
ईमेल मार्केटिंग। ओके, तो एक एंट्री गेट है, या प्रोडक्ट का कन्वर्जन या कंज्यूमर का कन्वर्जन के बारे में हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि कौन से चैनल से वो कन्वर्ट होगा। इसलिए द ब्रांड हैज टू बी ओमनी प्रेजेंट। अगर मान लीजिए मैं आपके साथ मैं कर रहा हूं इस मंच पे, दूसरा आई एम अवेलेबल ऑन गूगल एज वेल, तीसरा आई एम ऑन लिंक्डइन, नेक्स्ट आई हैव ऑन सम अदर प्लेटफॉर्म एज वेल। क्योंकि ओनली प्रेजेंट अगर आप होंगे तभी एक आप एस्टैब्लिश एक काम कर सकते हैं। सो एवरीवन हैज टू, जो भी सुन रहे हैं, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। Or if you have any questions, I'm directly in touch with people and the page. If you have something to ask, you are free to do that. Next, we have the consumer digital journey. आप बहुत सारे साइंटिस्ट रह चुके हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल रह चुके हैं, तो हर एक का मॉडल अलग होता है। सबसे पहले हम एक ड्रीम करते हैं। ड्रीम मीन्स इमेजिन करते हैं। हमको कोई भी प्रॉब्लम हुई, समस्या हुई, हम क्या करते हैं? वी गो टू गूगल, because we believe that Google will give us the right solution. So that is about the dreaming and the knowledge seeking. मान लीजिए हम खाली हैं, हमारे पास काम नहीं है, तो हम एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, and that is what the dreaming is. And you know what? That whenever you are searching Google, Facebook, Instagram, they know you more better than anybody else on this earth. तो वो आपसे बेहतर रूप से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब जानते हैं कि आप कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं, किस कंपनी का आप माउस यूज कर रहे हैं। एवरी अदर इंफॉर्मेशन दे हैव, और ये सारी स्टोर हो जाती है कुकीज, और फिर वो आपको टारगेट करते हैं। सो गूगल, फेसबुक। सो पहले आपने ड्रीम करा, फिर आपने एक्सप्लोर किया। द थर्ड इज द लोकेटिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट और द सर्विस। एंड फाइनली आफ्टर द लोकेशन, वो चौथा जो स्टेप है, दैट इज अबाउट द एक्सपीरियंसिंग। एक प्रोडक्ट हमने ढूंढा, प्रोडक्ट को हमने जूम करा, उसके फीचर्स डिटेल्स देखे हमने, और उसके बाद हम एक एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं यूजिंग द प्रोडक्ट। सो दिस इज अबाउट द कंज्यूमर डिजिटल जर्नी। नाउ इट मे बी द ई कॉमर्स वेबसाइट एज वेल। अगर आप ई कॉमर्स में हैं, तो प्रोडक्ट को आप देखते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, और ऐड टू कार्ट करने के बाद आप आगे जाते हैं चेकआउट पे। अब पता चला चेकआउट पे तो कस्टमर ने ऐड टू कार्ट जो किया था वो चेकआउट पे बाउंस कर गए, उन्होंने आगे परचेज नहीं किया। नाउ इट इज अ डिफिकल्टी लेवल। नाउ इन दैट केस यू नीड टू एनालाइज कि why the person has not checked out, and he was not able to become a customer. So that is what about the digital journey, which is highly complicated and cannot be understandable. Next we have about the media. तो ये चार चीजें: owned, shared, paid and earned media. तो owned is something which you own it. अगर मैं गूगल की बात करूं, या if we talk about the Facebook page और Instagram, वो सारी चीजें आप ओन नहीं करते हैं, वो बेसिकली प्लेटफॉर्म की ही है। हाँ, इनडायरेक्टली आप ओन कर रहे हैं, लेकिन होस्टिंग प्रोवाइडर इंस्टाग्राम है, होस्टिंग प्रोवाइडर फेसबुक है, और होस्टिंग प्रोवाइडर गूगल है। सो वेबसाइट, if you have blog content, that is something owned media. Then if we talk about the earned media is something, अगर आपको किसी ने मेंशन करा, लिंक्डइन पे आपको आपने किसी को टैग करा, फेसबुक पर टैग करा, दिस इज समथिंग अबाउट द earned media. Online PR, blogger, influencer mentions, and then we have the shared media as well. So if you have something, the shareability, for example, ये वाला जो इवेंट है, ये आप सबके साथ शेयर किया गया, everyone was having the link to join us via the Facebook and various other platforms. That is about the shared media. And then we have the paid media as well, where we have about the digital ads, where we are paying something to the platform and then we are seeking the right placement, कि वो एक हमारे पास होप है कि अगर हम गूगल को पैसा दे रहे हैं तो गूगल हमारा एड
सही जगह पर दिखाए ताकि हमारे पास प्रोस्पेक्ट बायर्स आए. देन वी हैव द डिजिटल मार्केटिंग फनल. स्वॉट एनालिसिस मैंने आपको बताया था. नाउ ये फनल है, डिजिटल मार्केटिंग का फनल. और जितने भी हमारे स्टेप्स हैं सीक्वेंस के, वो इस फनल के तहत आते हैं. जैसे अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, देन वी हैव द लॉयल्टी एंड एडवोकेसी एज वेल. हमको अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, opportunity to interact, opportunity to create something, the story in the form of story, reels, and that is what the conversion is happen. अगर हमें लगता है, मान लीजिए एक फेमस पर्सनालिटी है, ओके, और वो फेमस पर्सनालिटी इज हैविंग concert in the city. So do you think that we need to tell people that who that person is? Knowledge about the person is already people are having. We do not have to waste our time. In that case, we need to have the second step right in the picture, which is the consideration. And then we have conversion, loyalty, and that is what the final is advocacy, where customer becomes ours and they become the advocate. So, live example once again, अगर आपको मेरी नॉलेज अच्छी लगती है, certainly you will come back to me and you will ask more questions. तो इसमें क्या हुआ? It is about the advocacy. Also, you may share that person's profile, my profile, with some of your friends, and you may bring that person as well in the right next thing as well. That is what about the advocacy is. Then we have about the be a think tank to rank basically. ये कुछ मैंने आप सबके लिए ही लिखा है. तो जो भी चीज था फ्रेमवर्क, तो उसके तहत आपको ये सारी चीजें आपके साथ हर सब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, you have to learn from the failures, grow as the grassrooter, implement or spread like a locust, replicate like a virus, listen effectively, and repeat exponentially. So I preach and mentor not only this subject, but it is about the life as well. And that is why I want all my success stories to happen not only arithmetically, but the exponentially as well. So please make it a habit for you as well that whatever you do, make a checklist of the items, be socially aware, use your common sense, use the IQ, use the brain to the maximum limit, and then you have to work so that your success tells everyone the story. And then after, if we have to outrank somebody, outrank is कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमको आउट परफॉर्म करना है. तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन उनके लिए होता है जो आगे बढ़ना नहीं चाहते. अगर मैं देखूं, so till now I have trained personally more than 27,000 candidates worldwide. So I believe that the person who I trained, they should be my competitors in the negative sense. No, it is not. Why? Because I don't feel they are the competitors. Basically, competitors, you have to be a very positive thing. तो अपनी लाइन को हम आगे बढ़ाएं, जितनी भी लाइन है उसको पीछे हम ना करें. सो तो वो चीज हमें करना है. वी हैव टू स्टार्ट द बैक ट्रैकिंग, grow from the decimals, sustain the promises, germinate, that is the need for your brand, listen to your success, and repeat your success story. So this is my mantra to everyone. और मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया, और वो ज्यादा इन डेप्थ नहीं था, बट इट वाज वेरी बेसिक. और आई एम होपफुल कि वट एवर आई हैव डिस्कस्ड, you are able to understand, you are able to comprehend, and you are more than welcome that you can join via any other platform as well. So now I will listen effectively.
Since I was the speaker at the last, I will listen effectively. आप फेसबुक के माध्यम से अगर जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, तो आप मुझे लिख कर बता सकते हैं. इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, जब भी मुझे मौका मिलेगा उसका मैं आंसर जरूर दूंगा. And I will be impressed if you criticize. I will be glad if you happily ideate. I will work for milestones if you are ready to stir yourself in a right manner. So you do not have to pull people back. Just push yourself. I think that is the most important strategy because the life is only once. So if you are dragging or if you are in a sad mood, I think that is not going to help. So that is why be a learner forever. And the last of all, I would like to thank you to be a wonderful audience. Uh, and I wish you all the luck in the future and the nice weekend as well. सभी ने एक संडे का टाइम निकाला and you are just investing your Sunday and good time. I wish you all the lovely evening. And जिन लोगों ने मॉर्निंग शुरू करा है उनको गुड डे टू यू. People, those who haven't, those who have just started with the day, I wish them all the good day ahead and the productive one as well. Maybe Sunday. And you can connect with me via LinkedIn as well. The URL is right there under my name and the designation. That is LinkedIn and Kapil slash. And that's all from my side. Thank you. Thanks once again, Mr. Piyush and the entire team. Applauses to you. And I wish that you grow all together and let us see a very good collaboration and team all together with all the listeners across the globe. Thank you once again. All the best. Thanks. So with this, I just take a leave and in a hope that everybody will learn more altogether and they will think about the positivity and the growth success. Thanks once again.